and a very good evening to everyone. Um, Today class was preponed to 5:30 because I had some work, and today again we'll be working on heaps. बहुत heap हो रहा है थोड़ा, लेकिन this is the last. So yes, I hope I'm audible. Just let me check once, and then we'll begin. Okay, cool. So we'll be carrying on with the heap uh, data structure. Okay, let's check what are the questions that we'll be solving today. We'll directly be going into the questions because we have already covered up the concepts, right? So the first question that we'll be solving is kth largest element in an array. Okay, kth largest element in an array. So this question particularly can seem very simple. It is very simple, but there is a condition that lead code gives us that can you solve it without sorting? Okay, so this is what makes it a bit tough. And actually, if we face these kind of questions in the interview, then it's since we are now reading heap and studying heap, so we can connect that. Okay, we'll be using heap data structure. But if this comes up and pops up randomly, then we'll have to think of a data structure which helps us do certain stuffs, right? That's why we have kept this in this particular uh, topic. Okay. The second we will be covering is this particular question, that is task scheduler, right? Task scheduler. Okay, good. So let's see what the first question tells us to do. We'll be a bit fast today and just try and grasp everything because it's easy. Okay, see, kth largest element in an array, given an integer array nums and an integer k. Okay, so as we read our question, let's frame it in our own words. So there is a nums array. We are given an integer k. Return the kth largest element in the array. Okay, kth largest element in the array, largest. So suppose if this is a sorted array, so we'll have at this particular position the kth largest element, right? And note that kth largest element in sorted order, not the kth distinct element. Yeah, of course. Okay. So in this case, see, this is 3, 2, 1, 5, 6, 4. Okay, we have been asked for the second largest element, right? So in general cases, what we'll do is we'll directly sort. In general cases, we'll directly sort it. But since it's written that we do not have we don't require sorting in this particular problem, so we'll see a different approach. Okay, but if we sorted it out, we had 1, 2, 3, 4, 5, 6, and since the second largest, so the answer is 5. Okay, same goes for this also, and duplicates are allowed because if you sort this, you'll check the fourth from the last is 4. Okay, so duplicates are allowed. I hope you have got the question. अगर हम लोग सॉर्ट कर पाते हैं तो सॉर्ट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो सॉर्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? Again, there are two approaches to this. Okay, the first one is either you use max or min heap. Okay, this is the first approach. This is quite obvious कि ये क्या करेगा कैसे करेगा, ठीक है? The second approach can be using quick select. Now this quick select is somewhat similar to quick sort, and I'll tell you what the difference is. Okay, first let's move on and check for this particular thing, max and min heap. Okay. So max heap, इसमें तो बहुत obvious है कि first um, you first create a
प्रायोरिटी क्यू, राइट, पी क्यू लिखते हैं और उसको इंटीजर के टाइप में डिक्लेयर करोगे, यू गिव सम नेम and then you start inserting elements to it. Okay, you insert and next you pop how many times? K times. Quite simple. Okay, and whenever you pop it will automatically heapify the things, and again the root will be the maximum element, of course, right? So it's quite simple. So I've already written down the code. This particular part is not required. Okay, so see what I have done is created a priority queue max heap. Now we are pushing nums into maximum heap. Okay, the max heap rather. Then this is while minus minus k. You can write a for loop for I equals to 0, I is less than k. Why minus minus k? Because if you take 2, then the first, if you write k minus minus, तो क्या होगा, पहले तो 2 के साथ एंटर करेगा, फिर 1 के साथ एंटर करेगा, और 0 पे 1 के साथ भी एंटर करने के बाद 0 पे फेल करेगा, तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू द थर्ड एलिमेंट. माइनस माइनस के करने से क्या हो रहा है, तुम पहले बार में ही एंटर करते हुए एक कम कर रहे हो, like whenever you write minus minus k and suppose k is equals to 2. Okay, so how long will k be in the loop? First, it will go with 2, and the first time you enter the loop, 2 will get cancelled and be made to 1. Okay, the second time 0. So second time, right? So you will be returning the second element from the last. But यही अगर हम लोग k माइनस माइनस करते तो क्या होता, पहला बार तो 2 के साथ एंटर कर जाता फर्स्ट एलिमेंट, फिर माइनस होता 1 आता, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर माइनस होता 0 आता, तो मतलब तुम थर्ड एलिमेंट रिटर्न कर रहे होते, राइट? सो these are quite very basic element, but sometimes we ignore these stuff and land into some very silly problems. So I've just discussed this particular part here. Okay. So minus minus k लग रखा है, max dot pop कर रखा है, and then you return the root element, right? Because that will be the maximum element in a max heap. And now, of course, this has been submitted. Um, Let me check. I've already submitted this if you have seen. What happened? Okay, fine. Check this. Okay, so it's accepted, right? And the time complexity is quite fair. So this is one option. Let me tell you why min heap will be a better option here. There is a very small catch, which if you get, then like people will understand that the stuffs from root level. What this does is you are actually putting all the elements into the heap first, right? तो मतलब अगर हमारे पास 10 number of elements है, so you are actually putting all the 10 elements into the max heap, right? All elements into max heap. But if you have a min heap, okay, then what you can do is you will be putting elements into this particular. See, in a single loop, what you'll do is this for int num that belongs to nums. What you can do is you push num into the heap, but at the same time you check that if min heap size exceeds value k, okay, then at the same time you start popping it. Oh, this. So you can do it in a single uh, loop, okay. So what it will do is, out of 10 elements, if you are pushing 1, 2, 3, and our required case 3, so uh, after all this, it will start popping the elements out, right? We have already used this particular stuff here previously. Um, you can just go back and check. It's the same thing. I'll have to find it. But you get it what I mean. After that particular thing, we do not need that elements, right? So what we'll do is we'll start popping it out. Okay.
Okay, now let's move on to check the quick select approach. So if you know what quick sort is, okay, we will discuss a few um, details about quick sort here. So what quick sort does is in a particular array, it in a particular array, it chooses a pivot element, right? And it's generally at the rightmost part. Okay, it chooses a pivot element and then fixes the position of that particular pivot element. Okay, and all the elements, sorry, all the elements um, on the left of pivot will be less than the pivot element, and on the right will be more than the pivot element. That's how you're fixing the position, right? See, in a particular sorted, or rather, even if in not sorted array, if you fix a position of 6 to be here, right, and you say 6 is fixed, so and say 8 9, so 6 is fixed, and this can also be a case where 6 is fixed, right? This is not sorted, this is sorted, but what I am saying is I am actually fixing the position of 6. ठीक है, हम मेरे को मतलब नहीं है कि array sorted है या नहीं, ठीक है, मेरे को सिर्फ वो पर्टिकुलर के पोजीशन से मतलब है लास्ट का, राइट? वी डोंट वांट द होल एरे टू बी सॉर्टेड. तो यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बच रहा है कि जैसे हमें हमें ये पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर पिवट एलिमेंट, if we need an element that is larger than this particular pivot element, okay, if we need an index actually that is on the right of this particular index, then what we'll do, we will move towards the right only. And if we get to know that the index what we need is on the left hand side, or rather less than this particular index at the where the pivot lies, then we will only look at the left side. Okay, and we do not need to care about what happens to the um, rest part of the array. Okay, this is not required then. Fine, I'll code and then maybe you will get to understand this better. And now also you can figure it out what I'm trying to say. We just need the element on a particular index, and that gives us a hint कि पूरा sort करने का फायदा नहीं है, सिर्फ उस particular index को जानते हैं. So first of all what we need to see is what is the actual index that we are looking for. हमें बोला गया है kth largest. तो in an array कौन सा index हम लोग खोज रहे होंगे? If you know, if you can guess, that will be n minus kth index, right? How? Because मान लो हमारे पास एक array है and it has some size and the first index is 0, the last index is 6. So what is the n value? The value of n, that is 7 actually, right? And suppose we are told that we need the second element, so k is equals to 2. So we need this particular element, right? So which index this will be? 5. So that is 7 minus 2. If we are set k is equals to 1, so we need 7 minus 1. If we are set k is equals to 3, so we need 7 minus 3 and so on. So what is the index that we are currently looking, or what we desire is n minus kth index, right? So our whole focus will remain on this particular index while using the quick select algorithm. Okay. Now let's see how we'll be doing this. First of all, ये जो हमारा function है एक find kth largest, इसमें हमें दिया गया है एक nums और k, ठीक है? So find, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि k का वैल्यू पहले ही इसके बराबर सेट कर देते हैं, ठीक है? That is nums dot size minus k. And then what we can do is
we are returning quick select. Will This is a function that will define. Okay. Now this quick select will need, just try and understand what I'm saying, and then you'll relate afterwards, even if you don't, get everything right now. After quite a few time, you'll get to know. What quick select or quick sort requires is the left index, the right, sorry, okay. You need to pass on the kth value. Okay. So left, right, k, or of course you'll need this nums array, right? So what we are gonna send, we are gonna send, we'll be sending nums, the left that is currently 0, the right which is currently nums dot size minus 1, and k. ठीक है, साथ के साथ let's just code it there. Exact same thing that I've written in. So k is equals to nums dot size minus k, and you return quick select nums comma 0 comma nums dot size minus 1 comma k. ठीक है, ये हो गया. अभी we need to define this particular thing, right? Quick select. So what this quick select will return, it will return the k largest element. ठीक है, और जो यहाँ से रिटर्न होके आएगा वो ये सीधा सीधा ये वाला पर्टिकुलर पार्ट रिटर्न कर देगा. सो हमें क्विक सेलेक्ट में भी एक इंटीजर रिटर्न चाहिए. तो इंटीजर क्विक सेलेक्ट, नाउ वेक्टर int nums left int right int right. हम्म, अभी अभी देखो क्विक सेलेक्ट में क्या है, और रादर क्विक सॉर्ट में क्या है. गिवन गिवन एन अरे, ठीक है. Our motive is to fix the, first of all we take the pivot to be the rightmost index. ठीक है, यहाँ पे pivot ले लेते हैं. ठीक है, और अदर इसको बोल दो कि ये pivot element है. This is a pivot element. और हमारा टारगेट क्या है, इस pivot element के पोजीशन को फिक्स करना. पोजीशन कैसे फिक्स होगा, जब लेफ्ट वाला सारा उससे छोटा होगा, राइट वाला सारा उससे बड़ा होगा. ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट लेफ्ट का छोटा और राइट को बड़ा होना चाहिए. वी हैव फिक्स्ड द पिवट एलिमेंट. ठीक है, उसके बाद वी आर टेकिंग अ पॉइंटर काइंड ऑफ अ, जैसे हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच में करते थे ना, एक पॉइंटर लेते थे जहां पे एलिमेंट्स फिल करना है. तो सपोज वी कॉल इट पी. ठीक है, अभी इन अ लूप व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट आई फ्रॉम द लेफ्ट, जो यहाँ पे पास हुआ है, ये लेफ्ट और ये राइट. ठीक है, सो दिस इज राइट, एल और आर ही लिखते हैं. सो नाउ आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, विल गो अप टू आर. ठीक है, and what we got to do, we need to see if, let me write this, if nums at that particular I is less than or equal to pivot. ठीक है, तभी क्या करो, you are gonna swap nums of L with nums of P. ठीक है, P plus plus, and at the end what you do is you swap nums of P with nums at right. Okay, now अभी समझ में आएगा. देखो क्या हो रहा है, कि जब जब हमारा नम्स, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से वी हैव
1 2 4 8 6 7, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि I starts from left, ठीक है, I starts from this particular point, will go up to this particular point, and we have P here, ठीक है। Now what you need to say is this particular P and the pivot element. Our pivot element say is 6 6 को ही pivot करते हैं, ठीक है, easy होगा। So 7 and 6. So we pivot मान के pivot is our last element, so this is our pivot, okay, Pi. Now it tells you if nums of I is less than or equals to pivot. So is 1 less than equals to 6? Yes. So swap nums of L with nums of P. Actually, nums of I with nums of P. Yes. So what you are doing is you are swapping 1 with 1. Okay. So what you are getting 1. ठीक है. 1 को 1 से swap ही किया और कुछ नहीं कर रहा है. Or P plus plus. So now my P is at this particular point. ठीक है. And our pivot is still here. So is 2 less than 6? Yes. So you are swapping 2 with 2. Mind you, this is I and P. Okay, this is I and P, not with pivot. I and P, you are swapping 2 with 2. Okay, so 2 is swapped with 2. Similarly, you will swap 4 with 4 and move the point, this P pointer to this particular index where our element is 8. Okay, now this is where you will lock the P pointer because you get to know कि 8 है उससे मतलब बड़ा है, तो अभी 6 को कहीं ना कहीं वहां पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। आइदर वहां पे आना पड़ेगा या फिर और कुछ एलिमेंट यहाँ पे अगर मान लो 5 रहता तो 5 के बाद आता, वो अलग चीज है। बट इन दिस केस वी आर फिक्सिंग दिस p here because once you have p here you check whether nums of I is less than pivot. No, so p remains here. Okay, this is where the catch is. This p only moves when positions is fixed. You can say this moves when rather say कि moves when that particular position can't be occupied by this the last pivot element, when pivot can't be at P. So what it is doing is, see, P to bhi यहाँ रुक गया है. So now you again check, you go for 7, you check if nums of I is less than equals to pivot. The answer is still a no. So the P still remains here. Okay. And at the end you write swap nums of P with nums of right. So what you are doing is you are swapping 6 here and 8 there. So you make 1, 2, 4, 6, 7, 8. And now see this 6, the position of this particular 6 is fixed. Right? मतलब तुम इधर कुछ भी कर लो इस पर्टिकुलर साइड पे या राइट साइड पे कुछ भी कर लो, 6 वहीं पे रहेगा, ठीक है। और अगर तुम इसको बाकी सब के लिए भी रन करो तो भी ये ऐसे ही काम करता है। दिस इज द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। यू आर फिक्सिंग अ पिवट एंड यू आर चेकिंग and you keep on swapping until and unless that particular position is not valid for P, then you keep on swapping it. Okay, fine. So this is what we'll be coding there, and इसमें सिर्फ एक ही चेंज है। दिस इज द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, बट इसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि इफ आर p इज ग्रेटर देन k, मतलब कि तू सोच कि p जो है वो k के बाद है, तो क्या इसके बाद के एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होगा? नहीं होगा ना। सो वील बी लुकिंग ओनली एट द लेफ्ट पार्ट, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ p इज लेस देन k, सो वील ओनली बी लुकिंग एट द राइट पार्ट फ्रॉम p, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट k पास है, ठीक है। और एल्स अगर p इज इक्वल्स टू k, देन यू रिटर्न k। तो ये पर्टिकुलर तीन केसेस अराइज होगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रिकर्सिवली कॉल करके फंक्शंस सेट करेंगे। ओके, फाइन। So how do we start this? We start by selecting a pivot element. We start by fixing left. We start by fixing right, and this particular point of P. Okay. So int pivot is equals to nums of right. Now right is R. Okay. And P is equals to
लेफ्ट। फाइन। अभी हमारा लूप होगा पूरा, वो जो आई है, not 0 but I is less, I is equals to left to right, because you are not always passing 0. Okay, the next time you will be recursively calling this particular function, यहाँ पे 0 हमेशा नहीं होगा, this particular thing will not always be 0, so you'll have to start from left, and I is less than right, I plus plus। ठीक है, अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, this particular thing जो हमारा एल्गोरिदम है, if nums at I is less than equals to pivot, do particular things, that is you swap nums at I comma nums at p। हम्म, और p को साथ के साथ आगे बढ़ाना। ठीक है, और जब अगर ये सारा हो जाए काम, तो लास्ट मोमेंट, मतलब लास्ट वो क्या करना है कि लास्ट वाला जो बाकी रह गया जो स्वैप करने का, स्वैप करके उस पिवट वाले पोजीशन को फिक्स करना है, सो यू स्वैप नम्स ऑफ p विद nums at, one sec। स्वैप कर लिया। अभी वो जो कंडीशंस लिखा तीन दो, कि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है विल ओनली मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट, so you just have to write that if p is greater than k, so next time you call quick select, you're calling it the same nums, but p is now on the right hand side, so we need the left hand side, right, so left still remains the left, but the right जो बाइनरी सर्च वाला चीज है वही करना है, राइट को उठा करके इधर लेकर आना है। ठीक है, कहाँ पर, p माइनस वन पर, k still remains k, else if p is, sorry, p is less than k, then you return quick। Now this time we'll need to move left to p plus one, r होगा यहाँ पे, L होगा, else just return, अभी तो k वाला वैल्यू को सीधा रिटर्न कर देना है, तो वो p जहाँ पे है वहां पे लाई करेगा, राइट, जो पिवट वाला एलिमेंट जहाँ पे लाई करेगा वही ये वाला एलिमेंट होगा। if p is greater than k, return this, or else this, else this, this is fine। Okay, now this runs, and the time complexity here that takes is, uh wait, let me see, memory limit exceeded, 44 of 45th test case, close it, close it। There is some indexing issue where this particular thing here is fine, what does it say, memory limit,
Mm. What do they mean by memory limit exceeded? Is it because of the recursive call here? 50,000. Ah, maybe. Right, right. This is of the because of the we are always choosing the pivot element to the right of this particular array, right? And that is why the memory limit is being exceeded because you are again and again calling this particular quick select then recursively. So quick sort में क्या होता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है ऑन एन एवरेज इट इज ऑर्डर ऑफ एन ओके बट वर्स्ट केसेस में वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जा सकता है सो सिमिलरली आई गेस since we are recursively calling that particular thing right so we are choosing a pivot element so if this particular pivot element is if this was random then this could have been better I guess but if it's not random so it always selects the right most element as the pivot element okay and this is not always helpful मतलब कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि तुम जब जब एक एरे को सॉर्ट मतलब क्विक सेलेक्ट कर रहे हो ना तो राइट मोस्ट एलिमेंट आइदर रिमेन्स एट द राइट और यहाँ पे रह जाए मतलब एक पहले या एक जस्ट बाद में इसी साइड पे रह जाएगा सो द नेक्स्ट टाइम यू आर रिकर्सिवली कॉलिंग दैट फंक्शन यू आर अगेन कॉलिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ठीक है if again the next time the pivot element remains here so you are again calling this for this particular part so maybe because of that we have got a memory limit exceedation error. But you get it, this is the 44th condition, right? So it's just about the pivot element. I'm very sure of that. If you want, I can put it in ChatGPT and check. My memory exceeds. Oh, wait. इससे चल जाएगा क्या? Sorry. This works. Is that the only problem? Copying vector after every recursion. Pass vector by reference. That's okay. Yep. See, this is a bonus optimization where the pivot index is being randomly selected. Okay. L plus random modulus r minus l plus 1. This r minus l plus 1 is nothing but the size of the particular area of the array that we are interested in. ठीक है, this is what I was saying. इसको रख लो कॉपी करके इधर. So this can be an optimization technique. ठीक है, कि you are randomly selecting. अभी शायद वो तो चल जाएगा क्योंकि वो रेफरेंस से पास करना था वो हमने कॉपी करके वो कर रहा था. ये शायद हो जाएगा but this is a optimization जो कि we can put ये भी गारंटीड नहीं है कि हमेशा चलता है क्योंकि these all things are based on probability ओके इसमें एवरेज केसेस और ये केसेस रहेगा अभी देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है ठीक है अभी ये टाइम लिमिट एक्सीडेड तो पक्का इसके कारण ही आ रहा है सो लेट्स सी इफ चेंजिंग दिस टू दैट हेल्प्स इसको कर दो एल प्लस रैंडम पर्सन तो अभी हमने बस पिवट चेंज किया है लेट्स सी दिस वर्क्स hands on we are getting to know oh no this won't work then nums of pivot index and nums are pivot index and are what did that say swap okay we need a swap
क्योंकि आगे का जितना केसेस है ना वो हम लोग राइट साइड को लेके किए हैं, तो जो भी पिवट सेलेक्ट कर रहा है उसको राइट साइड के साथ स्वैप करने पे ये क्या दे रहा है भाई? लेट्स आस्क चैट जीपीटी ओनली कि पूरा उसके साथ कोड दे। Where does it tell to swap? I did that particular thing. Let's see what an optimized version can be along with the random thing. Okay, random pivot. This is what we did though. Okay, wait. Hmm, will this work? Yes. Let's see. If this works, it works, and if not, again, okay. You'll have to see one optimized condition, but this is how it should work. मतलब ये कोड ऐसा गलत नहीं है. So we'll see this, okay. बाकी heap यूज करके तो वैसे भी वो हो जाएगा. This is again, you just need some optimizations here in order to pass that last test case. The benefit of using this particular quick sort will be um, that you get an average time complexity of order of n. Okay. और यहाँ पे देखें हम लोग अगर पहले वाले में हीप वाले में, so यहाँ पे तो हम लोग पॉप कर रहे थे आउट k टाइम्स, so it takes an order of n log k. ठीक है. ऑफ कोर्स वो क्विक सेलेक्ट वाला ज्यादा बेटर होगा बिकॉज इट्स ऑर्डर ऑफ n. ओके. इसको ऑप्टिमाइज अप्रोच एक बार मैं भी देख कर बता दूंगा. There is some changes. I just think there will be very quite a few changes and that will work. This last test case is not passing. Okay, fine. We'll see that later. Okay. Let's move on to this particular thing, task scheduler, and see. I've already written the code there just to save time because we'll be focusing on the question. Okay. क्योंकि इसका question ज़्यादा better है. मतलब इसका code तो normal heap वाला ही है. Um, You are given an array of CPU tasks, each labeled with a letter from A to Z and a number n. Okay, so we are given an array. ठीक है, tasks. सारा जो आयत इंडेक्स पे है that is any of the alphabetical letters. So we have 26 in total. Okay, each CPU interval can be idle or allow the completion of one task. Tasks can be completed in any order, but there is a constraint. There has to be a gap of at least n intervals between two tasks with the same label. So, see, we'll go with example. What it says is कि जो भी दो task है जो same है, ठीक है, A and A, you need to have a minimum gap that is defined by n here. Okay. So if you get a task, suppose x x y y, and you are told that your n is equals to 2. So once you have executed X, you'll need a gap of 2 in order to execute the next X. Okay. So see, अभी तुम अगर ऐसे देखोगे तो you are already creating a greedy approach कि हम क्या करते हैं
जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है, दैट इज व्हाट विल डू, राइट? अगर मान ले हमारे पास ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो वी नीड टू रिटर्न दी मिनिमम नंबर ऑफ सीपीयू इंटरवल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है, कि मतलब कितना ब्लैंक्स ऐसा लगेगा ताकि मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए, एंड एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंस द सीपीयू विल एग्जीक्यूट ओनली वन सिंगल टास्क, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस दैट ए को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर एन हमारे पास 2 दिया हुआ है तो बी और सी को तो कहीं भी फिट कर लेंगे, बट ए को टाइम लगेगा ऐसा कि ए ए एंड देन यू कैन फिक्स बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी एनीवेयर, ठीक है, बट ए तो एक चीज तो बहुत क्लियर हुआ कि वी नीड टू वर्क विथ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट, राइट? इन दिस केस x, दो बार एक दो गैप्स के बाद x, y, now you can't put y here, so you keep this as idle and you place y here. So what is the answer in this particular case? You will have 5 as the answer, okay? 5. Now the example here is a, so a, b, and you have n equals to 2. So what you do is a, a. Now you're done with a. Now you place b, and after 2 gap you place b, after 2 gap you place b. ऐसा कर सकते हैं। कितना आंसर? 8। ए बी आइडल, ए बी आइडल, ए बी, ए बी आइडल, ए बी आइडल, ए बी, ठीक है। तो ये तो खुद में ही एक ग्रीडी सॉल्यूशन है। सो दिस इज वन वेरी गुड अप्रोच कि तुम क्या करो सबसे पहले कि ए जो भी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट है उसको प्लेस करके फिक्स कर दो, और फिर बेस्ड ऑन द रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बाकी सबको भी सेम वैसे करो, ठीक है। दिस कैन बी वन सॉल्यूशन। हम लोग सिंस हीप पे अभी बेस्ड है, तो विल सी द सॉल्यूशन दैट रिक्वायर्स हीप। यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखा है, this is mathematical, you just, this is a formula and just works out, okay। ये देख लेना खुद से, ये how this comes, this is quite easy to understand, okay, you just check it once। but हम लोग heap लेके करते हैं, रुको, we'll switch and we'll check how this heap things work। तो what do we know? First of all we know that we need to count frequency। अभी बाकी सारे lectures से what we have seen is, in order to count frequency what we can use, we can use a hash map, ठीक है, कि एक एरे का सारा एलिमेंट्स का बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर इंडेक्स वी हैव फ्रीक्वेंसीज, ओके, दिस इज डन। नेक्स्ट व्हाट वी नीड इज, वी नीड मैक्सिमम ऑफ दोस फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंट है हीप का, कि मैक्सिमम ऑफ दोस फ्रीक्वेंसीज। नाउ मैक्सिमम ऑफ दोस फ्रीक्वेंसीज में कौन सा हीप लगा सकते हैं अपने को, मतलब सपोज एट अ पर्टिकुलर पोजीशन ए हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉलोड बाय बी एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, so we can store the frequency in a max heap। क्या स्टोर कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, ओके। नाउ वी हैव स्टोर्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी तो मेरे को पता चल जाएगा कि अगर हमें कुछ टास्क कराना है तो हम क्या किए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ए का है, तो ए को पॉप करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो ए हमारे पास 5 ठो है, तो ए को सबसे पहले पॉप किया, बचा कितना? 4। बट इसके साथ साथ एक चीज और देखना है, दैट इज एन, ठीक है, कि वंस यू हैव एग्जीक्यूटेड ए and suppose n is equals to 5. So once you have executed A, you are left with A as 4. Now the frequency remains 4, but now you have a timer running which says कि अब तुम 5 सेकंड तक A को वापस execute नहीं कर सकते, right? So see, first of all we are having a maximum heap to store the frequency. Now we need to store this cooldown effect also, कि 5 सेकंड तक अभी नहीं जा सकते आगे। तो for that we can use Q, ठीक है। और इसमें कैसे स्टोर करेंगे? पेयर वाइज फ्रीक्वेंसी और टाइम, ठीक है। उससे पहले क्या कर सकते हैं कि टाइम इक्वल्स टू जीरो इनिशियलाइज करके रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि स्टार्ट में टाइम इक्वल्स टू जीरो है, और जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग टाइम, ठीक है। और साथ के साथ क्या करेंगे? मैक्स हीप से पॉप
मैक्स हीप से पॉप, और फिर भी अगर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स तो क्यूब पे इंसर्ट करेंगे विथ जो भी करंट टाइम चल रहा हो प्लस एन के साथ, है ना, वो बाकी है अभी। और ये चीज तो एक लूप में चलेगा। अभी क्यू से रिलीज भी करना है, लेट्स से कि ए का जो एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब जो रिमेनिंग टाइम था 5 का, वो कंप्लीट होने के बाद ए को वापस भी तो लेके आना है ना हीप में, तब तो वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। सो इफ द इंसर्टेड टाइम, okay, so that will be lying in q dot front, and of course this is a pair, so q dot front dot second is equals to the time of the current instance। ठीक है, टाइम मान लो बढ़ बढ़ के 10 सेकंड हो चुका है ऑलरेडी, तो अब तुम ए को ला सकते हैं। if this happens, then you need to pop, rather before popping you need to insert it into the queue, into the heap, so max heap dot push q dot front, and now q dot front का frequency वाला पार्ट सिर्फ, तो q dot front dot first, ठीक है, और q dot pop, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये पूरा चीज एक लूप में चलेगा। मतलब तुम समझ रहे हो, हम लोग दो डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं एक साथ में। फर्स्ट वी आर स्टोरिंग द फ्रीक्वेंसीज in a maximum heap, and then we are keeping a queue for getting the cool down effects, ठीक है। This was a question that was asked on in Google interview, okay, so it's taken up from there। और यहाँ पे दो डेटा स्ट्रक्चर का पैरेलल यूज भी है, ठीक है। लेट्स सी if we can successfully code this particular thing। सबसे पहले तो एक वेक्टर बना लेते हैं हैश का, साइज 26, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फाबेट से 26 है, कॉमा 0, ठीक है, हैश ही नाम देते हैं। नाउ फॉर कैरेक्टर टास्क, okay, that belongs to tasks, what we are going to do, we are incrementing hash of task minus a, since we are told that all are capital, okay। इससे क्या हुआ कि हमने वो जो हैश वाला वेक्टर है उसमें सारा फ्रीक्वेंसीज को काउंट करके डाल दिया, ठीक है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्टोरिंग फ्रीक्वेंसीज of particular characters, right? Abhi we need a priority queue which will store again frequency, let's name it max heap, hmm? और हमारे को एक क्यू भी चाहिए, बट इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं कि डाल वो सारा फ्रीक्वेंसी डालते हैं। सो cnt that belongs to hash, what are we going to do is max heap dot insert, or rather push cnt, okay। ओ अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि बहुत सारे जीरोस भी होगा ना, तो इसमें कंडीशन डालना पड़ेगा if cnt is greater than 0, क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट तो मान लो नहीं भी हो सकता है ना, लाइक सिर्फ अगर ए और बी है तो सी टू जी का सब 0000 स्टोर होगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हमने हीप पे तो इंसर्ट करा दिया, अभी एक क्यू बनाना है, और क्यू किसका बनाना है, पेयर which will store frequency and time, so the queue will have pair of integer comma integer, okay, let's name it Q. Now while max heap is not empty, as well as जब तक क्यू में कुछ कुछ एलिमेंट है तब तक हम लोग को रन करना पड़ेगा, मतलब एक क्यू में अगर कुछ बाकी है तो इसको भी तो एग्जीक्यूट कराना है। तो आइदर हीप एम्प्टी ना हो या तो क्यू भी एम्प्टी ना हो, तब तक ये चलेगा, ठीक है। और क्या होगा,
विल बी पॉपिंग फ्रॉम मैक्स हीप। ठीक है, सबसे पहले तो एक टाइम इनिशियलाइज करना है, राइट? इसके अकॉर्डिंग पे काम होगा। सो टाइम, एवरी टाइम वी एंटर द लूप वी आर इंक्रीमेंटिंग टाइम। इन मैक्स हीप अगर एम्प्टी ना हो, इफ और अदर मैक्स हीप अगर एम्प्टी हो जाए, सो वी कैन मेक टाइम को क्या बना सकते हैं, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास हीप में कुछ बचा ही नहीं, बट क्यू जो है वहां पे एक ए है जो कि 5 सेकंड के लिए वेट कर रहा है, और अभी पर्टिकुलरली टाइम है मान लो 10। ठीक है, और हीप तुम्हारा खत्म हो चुका है और ये स्टिल 5 सेकंड के लिए वेटिंग है। तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन डायरेक्टली मेक टाइम टू दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब कि तुम टाइम को यहाँ बना करके ए को वापस निकालना चाहोगे ना, कि ए को तो बाहर कर दो, क्योंकि वो कूल डाउन करेंगे, क्या करेगा। तो अगर हमारे पास हीप में कुछ नहीं है, सो टाइम विल बी इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट डॉट, टाइम किस में स्टोर किया है, सेकंड, एल्स काउंट विल बी मैक्स हीप डॉट टॉप -1। जब जब एक निकालेंगे ए को यहाँ से, ए वॉज 5, सो ए नाउ बिकम्स 4। सो जब भी ये ए हम लोग नेक्स्ट क्यू के अंदर डालेंगे, तो हमारे को क्या डालना है, क्यू के अंदर एक्चुअली ए नहीं डालना हमने। हमें मतलब ही नहीं है कि कैरेक्टर कौन सा है, हमें मतलब है कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम क्या लग रहा है। लास्ट में टाइम रिटर्न करना है मैक्सिमम। तो 4 के साथ एन एन को इंसर्ट करना है, राइट? सो मैक्सी डॉट पॉप, पहले तो ए को हटाया। ठीक है, अभी क्यू में इंसर्ट किया। इफ वी स्टिल हैव अ काउंट, then we need to insert q dot insert in form of a pair. What do we insert? We insert that particular frequency and we insert time plus n. ठीक है, तो अभी तो q में डाल रहे हैं, अभी q से कब निकालेंगे? when we are told that if our q is empty and then q dot front dot second equals to time। पहले तो q empty नहीं होना चाहिए, और q का फ्रंट डॉट सेकंड मतलब ये पार्ट कि a 5 हो जाता है लास्ट वाला। तो अभी क्या करेंगे कि मैक्स हीप में a को वापस से पुश करना होगा, क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग इज वी स्टिल हैव 4 एज लेफ्ट। तो इसको भी वापस एग्जीक्यूट कराना है ना? तो इसको वी नीड टू पुश बैक टू दिस पर्टिकुलर हीप, राइट? एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी मैक्सिमम होगा उसको पॉप करते रहेगा। ओके, मैक्स हीप डॉट पुश, वी नीड टू पुश क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डालना है अपने को उसमें, और क्यू से हटाओ उसको। ओके, and then you finally return the time। सिर्फ ये वाला पार्ट को देखो एक बारी, you'll get to understand what it says। ठीक है, जब जब सीपीयू एक टारगेट एग्जीक्यूट करने को जाता है, यू आर इंक्रीमेंटिंग द टाइम बाई 1। फाइन, अभी इस इफ वाले स्टेटमेंट को छोड़ के एल्स पे आओ।
क्योंकि हीप में क्या होगा, सबसे पहले इट्स आइदर कि तुम्हारे पास कोई टास्क एग्जीक्यूशन के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो एक कंडीशन है कि हीप एम्प्टी रहे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि तुम सारा हीप को एग्जॉस्ट कर चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास क्यू में भी कुछ नहीं बचा। क्यों कुछ नहीं बचा? क्योंकि अगर क्यू में कुछ होता तो वो ऑटोमेटिकली हीप के अंदर पुश होते रहता, राइट? या तो वो कंडीशन, नहीं तो जब जब ये हमारा आइडल वाला कंडीशन आ रहा था, ये वाला कंडीशन, ठीक है, इस पॉइंट पे हीप पे हमारे पास कुछ नहीं है, तभी वो आइडल कंडीशन पे है, ठीक। और जब वो आइडल पे है, हम क्या कर रहे हैं कि टाइम को उठा के, देखो यहां से समझिए, इसका इसका क्या टाइम है, ठीक है, इसका टाइम है 1 2 3 4 5। सो सिंस वी हैड 1 here, we are pushing an x into the queue with time as 4, ठीक है, frequency as 1, timing as 4, okay, same goes for y. So now y is pushed, so y, and now time is pushed as 5, ठीक है, कि y नेक्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूट हो सकता है वो 5 पे हो सकता है। तो जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन है, तो ये जो बचा है सारा एलिमेंट्स, ये तो हमारे पास एक क्यू में है, हीप में तो कुछ बचा ही नहीं, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडल बनाने के लिए टाइम को सीधा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो। समझ रहे हो, इसके बीच में तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना आना। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि 2 के बाद वी आर डायरेक्टली पुशिंग द टाइम टू बी 4, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट देयर इज नथिंग दैट इज गोना कम इन बिटवीन, ओके, कूल। नाउ एल्स, you are, what you are doing is you are popping from the maximum heap, and hence you are decrementing the frequency by 1, ठीक है, and if the frequency still remains, you need to insert it into the queue with the frequency and the time, okay, done till this part is done. Now if the queue is not empty, and so this is being checked on every loop, okay. Now every time you are executing a task, the CPU is checking कि हमारे पास एक क्यू में कुछ ऐसा तो नहीं है जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रखा हुआ है वहां पर, ठीक है। So it is checking if q dot empty, q is not empty, and q dot front dot second, this is the time, is equal to the time currently, x को 4 पे बाहर आना है, ठीक है, y को 5 पे बाहर आना है। मान के चल कि एक पॉइंट पे a रहता जिसका टाइमिंग 4 के लिए वो लॉक किया हुआ है, तो जैसे टाइम 4 होगा उसको बाहर आना है ना। तो जैसे टाइम 4 हुआ, तुम क्या करोगे, उसको वापस से हीप में पुश कर दोगे ताकि वो अगला एग्जीक्यूशन पे रन हो, ठीक है। और क्यू से हटाना पड़ेगा तुमको, और ये रिपीट तब तक होगा जब तक हमारा हीप भी एम्प्टी ना हो जाए और क्यू भी, दोनों एम्प्टी होगा तभी बंद होगा, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। max heap dot, what does it say? Push, फाइन, यहाँ तक तो ठीक है, गड़बड़ तो यहाँ होता है, फाइन, वर्क्स, कूल। सो ये एक तरीका है जहाँ पे हम लोग दोनों का यूज कर रहे हैं, हीप और क्यू, ठीक है। That's why I picked up this particular problem. And so today we'll be ending heap with this question here. Okay.
ओके देन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर एनालाइज करना है तो ये वाला पार्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ एन ले लेता है। ठीक है, वो पूरा काउंट फ्रीक्वेंसी वाला बनाने में। फिर हमारे पास एक क्यू है, हम जो हैश में पुश कर रहे होते हैं एलिमेंट, दैट टेक्स log of n टाइम, but how many elements that are we pushing? We are pushing n elements, right? So for every element log n टाइम मान के चलो, तो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन से n log n। अभी क्यूब बना रहे हैं तो एक यू विल हैव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो, एंड देन अगर तुम मेन एल्गोरिदम को देखो, मतलब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे नहीं चेक करते कि हमने हीप बनाया तो ओ ऑफ एन लग गया, इसमें एन लग गया, ऐसे नहीं। जो मेन एल्गोरिदम क्या है कि यू हैव अ हीप डेटा स्ट्रक्चर, यू हैव अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तुम यहाँ से पॉप करके यहाँ डालोगे और वहां से निकाल करके क्यू से निकाल करके इसमें डालोगे, तो ये चीज तुम रिपीटेटिवली कितने बार करोगे? जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, अगर दिस इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, so this is the amount of operations you are doing. You are popping, you are pushing, popping, pushing, okay, for every uh, character that we have, and hence यहाँ पे तुम time complexity बहुत safely O of m लिख सकते हो, where m is the number size of input, okay, size of input। तुम space complexity भी यहाँ पे O of m approximately बोल सकते हो, approximately नहीं, तुम O of m ही बोलोगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे, so this will be it, okay। So I guess we are done for today, and we are done with this heap data structure. um, we'll be meeting next on 16th, I guess, okay? Till then, see ya, bye bye, shubh ratri।